welcome everyone. Today I'll take kingdom Monera. हम 5 kingdom system of classification पढ़ चुके हैं वीटाकर का, जो 5 kingdom system of classification जिसमें था प्लांटी, एनिमलिया, kingdom Monera, प्रोटिस्टा एंड फंगाई. मैं एक एक करके लूंगी. आज मैं लूंगी kingdom Monera. Kingdom Monera, what are the characteristics of kingdom Monera? First is, these are unicellular kingdom Monera. These are, first point, the characteristics of kingdom Monera. These are unicellular organisms. Unicellular organisms and unicellular and prokaryotic, जो हमने पढ़ा था 5 kingdom classification के अंदर. Prokaryotic. What do you mean by prokaryotic? Prokaryotic means true nucleus is absent. Eukaryote के अंदर true nucleus होता है. True nucleus क्या होता है? That is, nucleus is not bounded by nuclear membrane. So in all prokaryotes, nucleus is not bounded by nuclear membrane. ये होगा प्रोकैरियोट के अंदर. यूनिसेलुलर organism means which we cannot see with our naked eyes. Prokaryotic means nucleus is not bounded by nuclear membrane. That means true nucleus is absent. Second point is DNA is naked. Naked means histones are absent. It is histone. What do you mean by histone now? Histone, it is not associated with histone. That means DNA is naked means histones are absent. It is, or you can say these are not associated with histones. अब histone क्या होता है? Histone हम पढ़ेंगे. Histone is a protein. Histone क्या होगा? Histone एक protein है. So histones are absent means it does not, DNA is not associated with histones. So histone है क्या चीज? Histone एक प्रोटीन है. अब histone करता क्या है, DNA के साथ कैसे एसोसिएट रहता है, वो हम देखेंगे. Suppose these are histones. Okay. So these are histones. So many histones suppose. Okay. Rough diagram I have made. So histone, these are all histones, and in this if you see the DNA is associates. इनके साथ क्या एसोसिएट होता है? DNA. ये DNA है और ये हिस्टोन है. अब ये जो स्ट्रक्चर है, this complete part, that means this is histone, and this is DNA. So here you can also write that histones DNA is naked means these are not associated with histones. Histones are absent. So these are not associated with histone मतलब DNA क्या हो जाएगा? नेकेड हो जाएगा. नेकेड हो जाएगा मीन्स जस्ट इस तरीके से प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है. सो ये जो डीएनए और हिस्टोन है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है और इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम. ठीक है. सो डीएनए is not associated with histone. हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि what are histones, कैसे ये डीएनए के साथ एसोसिएट रहता है. सो हम देखेंगे ये जो हिस्टोन है, these are all histones, ब्लू कलर जो मैंने ड्रॉ किया है, और उसके ऊपर डीएनए एसोसिएट रहता है. डीएनए उसके साथ लगा हुआ रहता है, ऐसे कॉइल बना लेता है कि डीएनए इज अ लॉन्ग हेलिकल स्ट्रक्चर. तो डीएनए क्या हो जाएगा? ये सारा कॉइल हो जाएगा किसके ऊपर? हिस्टोन के ऊपर. हिस्टोन क्या है? एक प्रोटीन है. So all the DNA are associated with histone and it forms a structural unit which is known as nucleosome.
ठीक है। और ये क्या करेगा, एक कंडेंस्ड हो जाएंगे, सारे जितने भी लॉन्ग डीएनए स्ट्रक्चर है ये सारे कंडेंस्ड हो जाएंगे, और जब ये कंडेंस्ड हो जाएंगे तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, उसे कहते हैं क्रोमैटिन, उसे कहते हैं क्रोमैटिन। इस तरीके से बहुत सारे डीएनए बनेंगे और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे हम क्रोमैटिन। ठीक है। अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, हिस्टोन का स्ट्रक्चर, तो हिस्टोन हम देखेंगे दिस इज अ प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन डीएनए इट एसोसिएट्स विद प्रोटीन, इस तरीके से हिस्टोन के साथ अटैच रहता है, और उसके बाद क्या करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, कंडेंस हो जाता है, और ये बनाता है न्यूक्लियोसोम। इस तरह से ये क्या करेगा, हिस्टोन सब जितने भी लॉन्ग डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं इनको कॉम्पैक्ट करेगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। एंड दिस क्रोमैटिन इट हेल्प्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो हमने न्यूक्लियस के अंदर देखा है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। तो हमने जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा है उसके अंदर क्रोमैटिन होता है। ठीक है। और क्रोमैटिन जो है वो इट हेल्प्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया हिस्टोन का, लेकिन ये हिस्टोन जो है ये किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होंगे। तो डीएनए बिल्कुल नेकेड होगा, इस तरीके से डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है। सो ये तो हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। नाउ द third point, that Monera it founds everywhere, extreme temperature, air, water, soil, सब में, हर जगह आपको मोनेरा दिखेगा। मोनेरा एज आई सेड, जब भी मोनेरा बोलते हैं तो बैक्टीरिया, मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया, ऑल द बैक्टीरिया दे आर इंक्लूडेड इन मोनेरा। अब नाउ मोनेरा इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स अगेन। ठीक है। It is divided into two groups. Two subgroups. One is archibacteria, and another one is eubacteria. ठीक है। Monera it is again divided into two groups, that is archibacteria and eubacteria. Archibacteria जो है ये बहुत old living cells है। ठीक है। और यू बैक्टीरिया जो है ये मॉडर्न सेल्स है, मॉडर्न बैक्टीरिया है, ये ओल्ड है और ये मॉडर्न है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होता है विच इज विदाउट पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल इज विदाउट peptidoglycan. So cell wall is without peptidoglycan. Eubacteria it is again subdivided into subgroups, that is there are many, it is divided into many subgroups, but the main important one is cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट मीन्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है। दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है। सो यूबैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू मेनी सबग्रुप्स, इट डिवाइड्स इनटू मेनी सबग्रुप्स, बट one distinctive group is cyanobacteria. This cyanobacteria it is also known as blue green algae, and blue green algae means what is present, chlorophyll is present, and when chlorophyll is present that means this bacteria can prepare their own food. ठीक है। तो ये तो हो गया आर्कीबैक्टीरिया और ये हो गया मॉडर्न, दिस इज मॉडर्न, एंड दिस इज ओल्ड बैक्टीरिया, यू कैन सी old living
ठीक है, तो हमने पढ़ा आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा. हमने पढ़ा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोटिक मीन्स द nucleus is not bounded by nuclear membrane. Second, we have done DNA is naked. DNA is naked. What do you mean by DNA is naked? Means the DNA as it is present in the cytoplasm, it is not associated with histone. As I said, histones, DNA associates with the histone and they form a structural unit known as nucleosome. And this nucleosome, then all this DNA, histone, they are all form a compact structure. They condensed and form a compact structure which is known as chromatin. And this chromatin, it plays an important role during cell division. ठीक है. Now ये तो हमने पढ़ा histone, but histones, as I said, histones are absent in DNA. In DNA, DNA is not associated with histones. Here, that means that is DNA is not associates with histones. ठीक है. The DNA is not associates with histones. This we have done. Now, Monera again, it founds everywhere, even air, water, soil, सब जगह आपको बैक्टीरिया दिखेंगे. ठीक है. Now, Monera it divides into two groups, that is Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria, these are old cells, and Eubacteria, these are modern bacterial cells. ठीक है. Archaebacteria, the cell wall is without peptidoglycan, whereas here these are again divided into, these are with peptidoglycan. ठीक है. अब इसके अंदर peptidoglycan है, इसके अंदर peptidoglycan, cell wall is without peptidoglycan. ठीक है. इसके अंदर peptidoglycan present रहता है. Now these are again divided into many subgroups, but important one is cyanobacteria, and cyanobacteria is known as blue-green algae, and because chlorophyll is present, so it can prepare their own food. In my next video, I will take the types of bacteria according to their shape and according to the presence or absence of flagella.